जय जगन्नाथ समस्तंकु वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी ज्ञानपीठ। आशा करुचे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। तो चलंतु आजिरो क्लास स्टार्ट करिबा। आमे डाटाबेस रो प्रीवियस क्लास रे आमे डिस्कशन करिथिले किछि एमसीक्यू बेसिक कांसेप्ट जहां भी डाटाबेस रो अछि ता परे आमे किछिटा एमसीक्यू डिस्कशन करिथिले। ठीक अछि, आज आमे टिके कांसेप्ट डिस्कशन करिबा अबाउट डाटाबेस एवं ता पूर्व मु कहबा को चाहिबी कि कोन सिलेबस रही थरे आमे डिस्कशन करदबा। एक्चुअली डाटाबेस रो जो डाटाबेस टॉपिक रे कोन कोन आपण माने को पढिबार अछि एग्जाम पई एवं टिके आमे एग्जाम रो पैटर्न को डिस्कशन करबा, देन आमे कांसेप्ट को जिबा। ठीक अछि, तो प्रथमे आमे जदि देखिबा, जदि आपण माने बोथ कंप्यूटर टीचर आउ देखो सिलेबस बहुत सारा अछि। मु ईच टॉपिक जते बेले पढेबी सेही टॉपिक रो सिलेबस को डिस्कशन करिबी। ओके, तो आमे जदि देखिबा डाटाबेस रो जस्ट अ मिनिट। ओके, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखिबा जदि ए बोथ पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ओके पीजीटी पाई बोथ पीजीटी एंड कंप्यूटर टीचर जो माने प्रिपरेशन करूचंती सिलेबस सेम रहइबो हला। कंप्यूटर टीचर आ पीजीटी सीएस पाई सिलेबस सेम रहइबो। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रे हमें डिस्कशन करिबा अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ डाटाबेस, देन मॉडलिंग टेक्निक, डाटाबेस रो मॉडल, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल like hierarchical database, network, then we'll come to relational algebra, then relational database. तापर हमें डिस्कशन करिबा नॉर्मलाइजेशन। ओके, दिस इज इंपोर्टेंट कांसेप्ट एग्जाम पाई। देन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रिकवरी मैकेनिक्स, ओके देन कंकरेंसी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूटेड database, डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। दीज आर थ्योरीज हमें कोई परिबा डाटाबेस रो थ्योरी कांसेप्ट एगुडा। ओके, प्रैक्टिकल जदि देखिबा कांसेप्ट जदि हमें देखिबा एसक्यूएल देखिबा हमें प्रैक्टिकल पाई। ता सहित हमें देखिबा मध्य देखंतु कंप्यूटर टीचर जो माने प्रिपरेशन करूचंती तांको पई एसक्यूएल इज इंपोर्टेंट, कारण तांकर गोटे रिटन अछि, रिटन परे स्किल टेस्ट अछि, गोटे स्किल टेस्ट देन इंटरव्यू अछि। ओके, बट जदि हमें देखिबा कंप्यूटर साइंस जो माने प्रिपरेशन करूचंती तांको पई रिटन प्लस ओनली इंटरव्यू, स्किल टेस्ट ना जो माने एडा पीजीटी पई। सो दैट्स व्हाई हमें जो देखिबा कंप्यूटर टीचर पई एसक्यूएल इज इंपोर्टेंट, ता सहित पीजीटी को पई मध्य एसक्यूएल इज इंपोर्टेंट बिकॉज़ क्वेश्चन जते बेले आसीबो से एनालिटिकल क्वेश्चन दबो, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन दबो। गोटे कमांड देथिबो बा गोटे क्वेरी देथिबो, ता सहित चारोटी ऑप्शन देथिबो। ओके, हमें देखिबा को टाइप रो क्वेश्चन आसुची एग्जाम रे। तो टिके पीजीटी रे हार्ड क्वेश्चन आसीबो, मॉडरेट टू हार्ड, बट पीजीटी रे इजी टू मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन आसीबो। ठीक अछि, ओके ताला हमें सिलेबस आउ थरे मु कहि दउची कोन कोन पढिबा। हमें इंट्रोडक्शन पढ़िबा, मॉडलिंग टेक्निक पढ़िबा, देन हायरार्चिकल डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल डाटाबेस, नॉर्मलाइजेशन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रिकवरी मैकेनिक्स, कंकरेंसी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग, एसक्यूएल कमांड। तो जो थ्योरी पार्ट रहिला, थ्योरी कांसेप्ट हमें टिके ट्राई करबा जल्दी सरेया पई। वंस हमें सरे दबा थ्योरी कांसेप्ट, देन हमें जिबा एसक्यूएल कमांड को। ओके, प्रैक्टिकल भी करेबा, MySQL सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके डाटाबेस ताको प्रैक्टिकल करेबा, ता सहित हमें एमसीक्यू मध्ये करेबा। ओके, ईच क्लास रे मु एमसीक्यू आनेबी विथ कांसेप्ट आनेबी। ठीक अछि, तो एई परि भाबे हमें पूरा सिलेबस को कंप्लीट करिबा। ठीक अछि, ओके नेक्स्ट मु कहबा को जाइबी कि आपण माने देखंतु आपण माने ओएबी रो प्रिपरेशन करूचंती। ओके, आपण भी एई क्लासेस आपण मानन को हेल्प करिवो जदी आपण माने सॉफ्टवेयर फील्ड रे भी जदी जॉब करिया चाहउचंती आईटी फील्ड रे, तो एई क्लास मध्ये आपण मानन को हेल्प करिवो। ठीक अछि, तो आपण माने पूरा क्लास देखंतु। ओके, तो कंप्लीट करंतु क्लासेस, जहां भी पीडीएफ दरकार मु टेलीग्राम रे
शेयर कर देबे आपण टेलीग्राम चैनल जदि जॉइन करना टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करन ओके चलंतु स्टार्ट करबा क्लास ओके तो आज आम जस्ट इंट्रोडक्शन देखिबा डाटाबेस कोन ओके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोन ता विषय आम देखिबा कोन पय यूज करा जाय ता विषय आम देखिबा ठीक अछि देखो एते आम पढ़िबा दरकार नै यार पीडीएफ मध्ये देई देबी आपण मानको आपण माने निजे देखि नेबे मु पूरा कांसेप्ट बुझाई यार डेफिनेशन आपण माने निजे पढ़िबे ठीक अछि देखो DBMS और आमे जदि कहबा DBMS स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिस इज आमे कहि परिबा गोटे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहि परिबा दिस इज एन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओके जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हेल्प रे आमे कोन करि परिबा डाटा को स्टोर करि परिबा डाटा को आमे स्टोर करि परिबा डाटा को मैनेज करि परिबा ओके मैनेज इन द सेंस आमे इंसर्ट करि परिबा अपडेट करि परिबा डिलीट करि परिबा ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा क्लियर एति की क्लियर हेले तो यह होची हमरो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर रा काम बट प्रथमे हमें बुझिया को पड़िबो ए डाटाटा कोन ओके देखो data is a collection of raw facts which have not been processed to reveal useful information data टा होची गुटे कोन raw facts हमें कहबा ओके जत्ते बेले डाटा टा प्रोसेस हे जिवो सेते बेले हमकु कोन मिलिबो हमकु गोटे यूजफुल इंफॉर्मेशन टे मिलिबो प्रथमे डाटा टा थिबो रॉ मटेरियल वंस डाटा टा प्रोसेस हे जिवो हमकु कोन मिलिबो इंफॉर्मेशन मिलिबो डाटा इज रॉ डाटा को हमें प्रोसेस करिबा डिफरेंट टेक्निक रे हमकु मिलिबो इंफॉर्मेशन ठीक अछि जदि मो गोटे एग्जांपल नेबी जदि गोटे एग्जांपल नेबी डाटा डाटा रो गोटे एग्जांपल गोटे क्लास रे 50 स्टूडेंट अछन केते जण स्टूडेंट अछन 50 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट्स को मार्क डिफरेंट सब्जेक्ट रो ई मार्क टा कोन डिफरेंट सब्जेक्ट रो मार्क डिफरेंट सब्जेक्ट रो मार्क होची दिस इज डाटा हमें जदि कहबा गोटे क्लास रो 50 जण स्टूडेंट अछंती एवं 50 जण स्टूडेंट को डिफरेंट सब्जेक्ट रो मार्क दिस इज कॉल्ड डाटा ओके इंफॉर्मेशन कोन इंफॉर्मेशन होची जत्ते बेले ए मार्क को हमें प्रोसेस करबा डिफरेंट टेक्निक लाइक हमें एवरेज काढिबा एवरेज मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट ओके sum mark of total student then हमें कोई परिबा highest mark minimum mark okay. these are information हमें किपरि प्रोसेस कले ना हमें एवरेज कैलकुलेट कले हमें सम कैलकुलेट कले हमें हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क कैलकुलेट करे फाइंड आउट कले मिनिमम मार्क फाइंड आउट कले these are called information क्लियर बुझी पारथि आशा करछि आपण माने तो डाटा इज ए रॉ फैक्ट डाटा टा जेतोला हमें प्रोसेस करिबा से हमर कोन दबा इंफॉर्मेशन बुझी होची this is one interview question note it down eta would interview question important interview question what is the difference between data and information first question इंटरव्यू फर्स्ट क्वेश्चन पचारिबो जदि आपण डाटाबेस
जदि आपण कहउछन्ति जे मो डाटाबेस रे पूरा परफेक्ट अछि ताहाले से डाटाबेस भितर को जिबा पूर्व प्रथमे ए क्वेश्चन टी पचारिबो डाटा और इंफॉर्मेशन भितर डिफरेंस को ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टूड नेक्स्ट जिबा हमें नीड फॉर डाटाबेस टा कोन पई दरकार ओके आमे तो डाटा को स्टोर करि परिबा डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड अछि लाइक फाइल सिस्टम हम पाखर अछि फाइल रे आमे स्टोर करि परिबा बट देखंतु आगुरु कोन थिला फाइल सिस्टम थिला फाइल रे डाटा को स्टोर होतला ओके इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल आगुरु हमरो डाटा टा स्टोर हुए फाइल्स रे फॉर एग्जांपल फाइल रे केमिति स्टोर हुए गोटे अछि सपोज सेल्स आउट अछि पेरोल डिपार्टमेंट दीटा डिपार्टमेंट अछि गोटे अछि सेल्स डिपार्टमेंट आउट अछि पेरोल डिपार्टमेंट ओके वन यूजर कोन करिवो से मेंटेन करिवो इंफॉर्मेशन स्टोर करिवो कोठारे ना सेल्स डिपार्टमेंट से गोटे फाइल 1 हला सपोज एटा हला फाइल 1 एठी से सेल्स डिपार्टमेंट रो स्टोर होची यूजर 1 यूजर 2 से कोन करूची ना पेरोल डिपार्टमेंट को संभालुची एवं से कोन स्टोर करूची फाइल 2 रे ना पेरोल विषय रे जहां भी डिटेल्स अछि से बा इंफॉर्मेशन अछि से कोडा स्टोर करूची पेरोल फाइल 2 तो दीटा फाइल हे गला तो प्रॉब्लम कोन एराइज हबो हमर डाटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेट डाटा स्टोर हो बुझियला नेक्स्ट डाटा इनकंसिस्टेंसी मींस कोन if a file is updated then all the files containing similar information must be updated else it would result in inconsistency of data बुझिया को चेष्टा करना देखो it data inconsistency माने फाइल थोड़ा हमें अपडेट करिबा ताले जहां भी फाइल रो इंफॉर्मेशन अछि समस्त इंफॉर्मेशन अपडेट होबा दरकार बट एई क्षेत्र रे हुए ना ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम रे हुए ना क्लियर तो सेति पई इनकंसिस्टेंसी देखा जाए ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम कोन हला ना लैक ऑफ डाटा इंटीग्रेशन मींस कोन ना डाटा फाइल्स आर इंडिपेंडेंट accessing information out of multiple files become very difficult माने बुझंतु सेल्स रे एडाला सेल्स रो फाइल एटा होची हमर पेरोल रो फाइल दीटांकर इंफॉर्मेशन अलगा जेते बेले आमे इंफॉर्मेशन को रिलेट करिबा सेते बेले आमे प्रॉब्लम रो पसिबा आमे दीटा फाइल को खोजिया को पड़िबो ए फाइल को खोजिया पड़िबो ए फाइल को खोजिया पड़िबो कारण गोटे फाइल रे बहुत सारा डाटा थिबो मिलियंस ऑफ डाटा थिबो तो दिस विल बी डिफिकल्ट अप्रोच ओके तो एया गोटे मध्ये हमर डिसएडवांटेज कोइ परिबा ट्रेडिशनल database system और data store system ओके जोटा हमर थिला फाइल सिस्टम कहि क्लियर बुझि पारछंती तो ताको ओवरकम करिया पई आम पाखु को आसीला गोटे मेथड गोटे सॉफ्टवेयर ताको हमें कहिले कोन DBMS database management system सॉफ्टवेयर एटा कोन ना database management system is a collection of programs that enable user to create, maintain and use a database. Okay, it enables creation of repository of data is defined once and then accessed by different user as per their requirement. Okay, this is multi-user. जब short question आसे DBMS का गोटे multi-user की नुहे yes DBMS गोटे multi-user system माने number of user गोटे सॉफ्टवेयर को यूज करि पारि बट फाइल सिस्टम इज नॉट मल्टी यूजर सेटा होच कोन सिंगल यूजर क्लियर तो जदि हमें हायरार्की देखिबा डाटाबेस सिस्टम रो तो एप्लीकेशन प्रोग्राम रहइबो देन DBMS सॉफ्टवेयर देन डाटा स्टोर होची बैकएंड रे दैट इज डाटाबेस ओके
आमे एटा को डीबीएमएस रो एनवायरनमेंट बोली कहि परिबा डीबीएमएस एनवायरनमेंट रो कोन कोन रहउची एप्लीकेशन प्रोग्राम रहउची डीबीएमएस सॉफ्टवेयर रहउची आउ हमर जोटी डाटाटा एक्चुअली स्टोर होउची क्लियर नाउ various operations that need to be performed on database आमे कौन कौन ऑपरेशन परफॉर्म करि परिबा डाटाबेस फास्ट आमे कौन परफॉर्म करि परिबा प्रथमे आमे डाटाबेस को डिफाइन करि परिबा कौन करि परिबा डिफाइनिंग द डाटाबेस ओके मींस एक्चुअल मतलब डाटाबेस रे को कौन हमर डाटा स्टोर होउची ओके एक्चुअल डाटा कौन स्टोर होउची एक्चुअल डाटा देन डाटा रो टाइप टा कौन ओके these are we can define तो डाटा टाइप कौन आमे नेक्स्ट धीरे धीरे आमे बुझिबा ओके डाटा टाइप कौन वेरिएबल कौन ओके अपकमिंग क्लास से आमे डिस्कशन करबा नाउ कौन सेकंड ऑपरेशन आमे परफॉर्म करिया कौन पॉपुलेटिंग द डाटाबेस populating the database means कौन it involves storing the data on some storage medium that is controlled by DBMS okay third रहुचे manipulating the database this is important manipulating means डाटा सहित आमे खेलिबा जदि आमे कहबा डाटा को आमे इंसर्ट करिबा डाटा को आमे अपडेट करिबा ओके डाटा को आमे रिट्राइव करिबा डाटा को आमे डिलीट करिबा this operation is called manipulating the database okay next sharing the database जहाँ भी आमे डाटाबेस रे डाटा स्टोर करूचंती आमे शेयर मध्य करि परिबा बुझियोची फिफ्थ रे protecting the database protecting means secure security आमर database management system the most important feature is security provide करे गोटे यूजर आईडी पासवर्ड मिले फॉर डिफरेंट यूजर each यूजर तांको यूजर आईडी आ पासवर्ड दे के लॉगिन करिवे एवं ताको एक्सेस करिवे मींस ऑथराइजेशन प्रोवाइड करे ऑथराइजेशन क्लियर एति बुझियला then maintaining the database it is easy to adapt the changing requirements okay different सब once तमे database मतलब database रे जानी देलो database concept बुझियलो देन गोटे database सॉफ्टवेयर तमे यूज करियो माने तमे अलगा सॉफ्टवेयर को इजीली यूज करि पारियो जदि फ्यूचर रे चेंज हो MySQL Oracle DB2 IMS IDS these are database software एवडा कोन DBMS रो एग्जांपल हम कोइ पाइ ओके SQL language जोडा में SQL रो फुल फॉर्म जदि हमें कहबा structure query language just a minute SQL what a programming language stands for structured query language okay तमे माने database पढुचो माने this language you have to learn once तमे SQL सिखि गलो तम पाखरे जे कोनोसी database रो सॉफ्टवेयर जा कि हमें कोइ परिया MySQL हे गला Oracle हे गला IBM DB2 हे गला MS Access जे कोनोसी सॉफ्टवेयर तम पाखो आसीबो तम माने यूज करि परिबो दिजार हमें कहि परिबा DBMS सॉफ्टवेयर रो एग्जांपल ओके बट तमे माने प्रथमे SQL टा सिखिबा को पड़े ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टूड जति के बाटा हमें पढिले आपण माने क्लियर थिबे जति किछि भी डाउट अछि मते कमेंट रे पचार ओके नाउ हमें देखिबा टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ DBMS कौन कौन यूजर अछंती जो माने ए सॉफ्टवेयर को यूज करछन सॉफ्टवेयर को तो जने यूज करबा दरकार ना यस और नो यस तो
को टाइप रो यूजर अछंती डीबीएमएस ताको लक्ष्य करिया। प्रथमे होची एंड यूजर किए ना जे यूज करे डाटाबेस को, मतलब जहा पई ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर टा तयारी हिच, दिस इज एंड यूजर। आमे होचंती कोन एंड यूजर। ओके, users who use the database for querying, modifying, generating reports as per their needs, those are called end user. They are not concerned about the working and designing of the database. सेमान जाननांती database टा किपरि काम करूची बैकएंड रे, किपरि डिजाइन हिची, सेमान ओनली यूज करिया जानछु। database सॉफ्टवेयर टा अछि, सेमान क्वेरी माने क्वेश्चन पचाउछन, मते स्टूडेंट रो मार्क काढी दियो, जस्ट क्वेरी लिखुछंती। ओके, से माने मॉडिफाई करूछन, जो माने मॉडिफाई करछन। ओके, मॉडिफाई मींस जदी डाटा टा को अपडेट करूछन, दोज आर कॉल्ड एंड यूजर। जदी एंड यूजर एग्जांपल दबा, मु जने एंड यूजर, आपण माने जने एंड यूजर, आपण माने डेवलपर नुहे। जदी आपण माने डेवलपर थिबे ता आपण माने होचंदी डाटाबेस डेवलपर, जे कि डाटाबेस को डेवलप करिवा, तयारी करिवा जानिची, आ किपरि वर्क करे जानिची। ओके, जो माने डाटाबेस को यूज करूचंती ताको हमें कहबा एंड यूजर। क्लियर? नेक्स्ट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए, जे डाटाबेस को हैंडल करे, हु हैंडल्स database. As the name implies, the DBA administrator the database and the DBMS. The DBA is responsible for authoring access, monitoring its use, providing technical support, acquiring software and hardware. बुझियला? यार फुल फॉर्म टा मन रखिबे, DBA stands for database administrator। एग्जाम रे पचार। ओके, नेक्स्ट यूजर होचंती एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर किए ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामर राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम टू इंटरैक्ट विथ द डाटाबेस। These programs are written in high level languages and SQL to interact with database। ठीक है, बुझो एप्लीकेशन प्रोग्रामर किए, आपण जानिथिबे सुनिथिबे जावा प्रोग्रामर, सी प्रोग्रामर, सी प्लस प्लस प्रोग्रामर और जावा डेवलपर, सी डेवलपर, सी प्लस प्लस डेवलपर। एमाने कोन करंती, एप्लीकेशन को डेवलप करन। फॉर एग्जांपल गोटे गेम एप्लीकेशन को डेवलप करे, ता पई जावा प्रोग्रामिंग दरकार। तो जावा प्रोग्रामर जावा लेखिबो, देन से कोन करिवो, डाटाबेस सहित एकु कनेक्ट करिवो। कोन करिवो, डाटाबेस सहित कनेक्ट करिवो। कारण खाली आमे जदी एप्लीकेशन टा तयारी करि दबा सेटा काम नुहे, कारण मेन इंपोर्टेंट थिंग होची डाटा टा स्टोर होबा दरकार। ओके, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर कोन करे ना, जो मेन प्रोग्राम जावा रे लिखे ता सहित डाटाबेस को कनेक्ट करे एसक्यूएल लिखि। बुझियला? ओके, नेक्स्ट होची सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट किए ना, सिस्टम एनालिस्ट डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर and the develop specification to meet the requirement। तो सिस्टम एनालिस्ट कौन करे ना, एंड यूजर को कौन दरकार होची, ओके, ताको एनालिसिस करे एंड से कौन करे ना, डाटाबेस रो डिजाइन एंड ऑल द टेक्निकल इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एस्पेक्ट को से कौन करे, एनालिसिस करे। बुझियला? तो जदी एग्जाम रे आसीबो MCQ टाइप रो क्वेश्चन तो निहाती आसीबो, सेठी क्वेश्चन देइतबो एमानंक मध्यरो कोटा गोटे DBMS रो जने यूजर, सेठी देइतबो एंड यूजर, अलगा सब ऑप्शन देइतबो, सेठी तुमको एंड यूजर सिलेक्ट करबार अछि। एमिति भी क्वेश्चन देइतबो, बहुत सारा एंड यूजर देइतबो, DBA देइतबो, एप्लीकेशन प्रोग्राम आ गोटे यूजर कोन गोटे देइ देइतबो, पचारतबो एमानंक मध्यरो कोटा DBMS रो यूजर नुहे, जने यूजर नुहे, तुमको सेठी सिलेक्ट करिया पड़ियो। तो सेति पई तम मानको जानिबा को पड़िबो केउ माने होचंती DBMS रो जने जने यूजर। बुझियोची? जदी पढुचंती भल से पढंतु, पूरा डेडिकेटेडली पढंतु, कारण दिस क्लास विल हेल्प तुमको OAV एग्जाम पई हेल्प करिवो, JNV पई हेल्प करिवो, केबी पई हेल्प करिवो। कारण ओडिया रे
कौन भी क्लासेस सेमिति डेडिकेटेडली नाही केही भी स्टार्ट करू नांती कि जदि भी केही करचंती पूरा क्लासेस नाही ओके कारण मु फेस करिछि से प्रॉब्लम मु चाहूनी आपण माने फेस करू आ एई टॉपिक जहां भी हम डिस्कशन करूचंती आपण माननकु जदि सॉफ्टवेयर फील्ड रे जिबा को अछि या मध्ये आपण माननकु हेल्प करी जहां भी आपण पढिचंती एकेडमी रे ता सहित एडा गोटे रिपीट हे जिवो आपण माननकु मतलब जो रिवीजन हे जिवो वन टाइप ऑफ रिवीजन इंटरव्यू को आपण माने इजीली फेस कर पारे बुझियो नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस अप्रोच कौन एडवांटेजेस रोची डीबीएमएस रो रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेट ओके डाटा डुप्लीकेशन रहिबो नाही इंप्रूव कंसिस्टेंसी कोई केसली इनकंसिस्टेंसी माने डाटा एट ए टाइम अपडेट होबनी बट डीबीएमएस रो अप्रोच होची डाटा एट ए टाइम अपडेट होबो अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी यूजर फ्रेंडली तो एई एडवांटेजेस को मन रखिबे कारण एग्जाम रे आसे क्वेश्चन कौन एडवांटेजेस माने एमसीक्यू ऑप्शन ले दे देथिबो तो या भितर को दीटा एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस देखो आपण माने जो गोटे मेन इंपोर्टेंट जिंसो कहबा को चाहिबी कि कंप्यूटर टीचर रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो एमसीक्यू गोटे चूज करिवे बट पीजीटी जो माने प्रिपेयर करूचंती सेठी आपण मानको चारोटी ऑप्शन देथिबो चारोटी रु दीटा ठीक करिवे पड़िबो मतलब कहिथिबो कि which two are correct or which two are incorrect which three are correct एमित क्वेश्चन सॉरी which three are correct एमित क्वेश्चन देथिबो कोइ नथिबे कि गोटे ऑप्शन बाछिबोनी सेठी बुझियला सेति पई तमे पूरा कांसेप्ट क्लियर होबा दरकार कांसेप्ट क्लियर हेले तमे एलिमिनेट करि परिबो ऑप्शन रु एलिमिनेट करि परिबो ओके तमे घोसी की जदी खाली डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करि कि जीवो एग्जाम रे फसिबो बुझियला कांसेप्ट क्लियर हो नेक्स्ट होची लिमिटेशन कौन लिमिटेशन रहिला डीबीएमएस अप्रोच रो हाई कॉस्ट सिक्योरिटी एंड रिकवरी ओवरहेड ओके तो ए दीटा होची अप्रोच मन रखिबो नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट होची रिलेशनल डाटाबेस ओके नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा रिलेशनल डाटाबेस तो हमें आज जस्ट बेसिक पढिले हमें आज जस्ट बेसिक पढिले जस्ट स्टार्टिंग हमें कहि परिया और इंट्रोडक्शन हमें कहि परिबा डीबीएमएस रो तो यार एमसीक्यू हमें प्रीवियस क्लास रे सार दे फर्स्ट क्लास रे मो एमसीक्यू बेसिक रो सार देची नेक्स्ट क्लास रे हमें रिलेशनल डाटाबेस पढिबा कांसेप्ट पढिबा ता सहित 10 टू 15 एमसीक्यू हमें देखिबा ओके हमें ट्राई करबा कांसेप्ट को क्लियर होबा पे ओके कांसेप्ट इज इंपोर्टेंट तमे वंस कांसेप्ट क्लियर हे गला माने जे कोनोसी क्वेश्चन आसीबो तम माने अटेम्प्ट करियो क्लियर नाउ गोटे इंपोर्टेंट कहिबी जिंसो एग्जाम पैटर्न बोल से सुनो एग्जाम पैटर्न कोन टोटल 200 मार्क रोची मु यार डेडिकेट वीडियो आनिबी तथापि मु कहि दोची आपण माननकु 200 मार्क्स रोची 200 मार्क टू 100 मार्क रहिबो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस रो 30 मार्क रोची रीजनिंग रो देन 30 मार्क रोची करंट अफेयर्स एटा होची पेपर 2 हमें कहि परिबा पेपर 1 ले 20 मार्क रहिबो हमरो ओडिया 20 मार्क रहिबो हमर इंग्लिश एटा हला पेपर 1 एई पेपर 1 होची क्वालिफाइंग केमिति करिवो सेटा भी कहि दोची आपण माननकु एवरेज रखिया को पड़िबो 14 विथ each रू above each रू greater than equal to 5 मार्क रखिया को पड़िबो वंस तमे एटा क्वालिफाई करलो देन तमरा ए पेपर टा से माने चेक कर
ओएबी कथा कहूँ जदि आपण ए पेपर क्वालिफाई करूना जेते मार्क रखिले भी से चेक करेंगे ना क्लियर ओके 100 सब्जेक्टिव 30 रीजनिंग 30 करंट अफेयर जदि 2000 मोस्ट प्रोबेबली ए ईयर नोटिफिकेशन आसीबा को जाउची 2026 माने आपण 2024 25 26 रो करंट अफेयर देखंतु ओके रीजनिंग जहाँ भी जेकोसी गवर्नमेंट एग्जाम रो रीजनिंग माने जो क्वेश्चन आछि ताको प्रैक्टिस करंतु विथ सब्जेक्ट रो कांसेप्ट क्लियर रीजनिंग रे 30 रु आउट ऑफ 25 आनिबा को ट्राई करो ओके तापर वीडियो आनिबा केते मार्क रखिले आपण मानको सेट स्कोर रहइबो ओके वंस नोटिफिकेशन आसी जाऊ ता विषय हम डिस्कशन करिबा पूरा आपण मानको क्लियर करि देबी इजीली एग्जाम क्रैक करिबा आपण माने ओके नो ओके आपण माने पूरा वीडियो मतलब पूरा क्लास कंप्लीट करंतु मो सहित रुहंतु शेयर करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु आपण माने सांग सहित शेयर करंतु जो माने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड रो रिलेवेंट वीडियो पाउनांती रिलेवेंट क्लासेस पाउनांती ओडिया रे शेयर करो ओके ता सहित टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करो ओके सो थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग